सो इन टुडेज वीडियो फॉर प्रीलिम सबसे पहला टॉपिक है ई श्रम पोर्टल. ठीक है, ई श्रम क्विकली देख लेते हैं. देखिए, ई श्रम पोर्टल जो है, दिस रिमेंबर दिस दैट इट हैज been developed by the Ministry of Labour and Employment. This is important. ठीक है, the Ministry of Labour and Employment has developed the e-Shram portal for the benefit of whom? For the benefit of unorganized workers. तो e-Shram portal याद रखिएगा, it is a national database of unorganized workers. कौन कौन से वर्कर्स इसके अंदर आते हैं? अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं. सी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में का मतलब क्या होता है. सिंपलिस्टिकली अगर देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर दोज एस्टैब्लिशमेंट जहां पर दैट एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स. ठीक है, दे आर एंगेज इन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दे हैव लेस देन 10 वर्कर्स. सो दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. So it comprises of those establishments that have less than 10 workers. So and it is engaged in production or sale of goods and services. ठीक है, अब देखिए, ये जो डेटाबेस होगा ई श्रम पोर्टल का, दिस विल बी इज द फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. इस डेटाबेस में क्या क्या होगा? इस डेटाबेस में उस वर्कर्स का एक वर्कर का नाम होगा, उसका आधार आईडी होगा, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, educational qualification, what are the skill that the worker possesses, and family details. ठीक है, तो category of unorganized workers that are going to be covered under this e-Shram portal are construction workers, migrant workers, gig and platform workers, street vendors, domestic workers, agricultural workers, and other unorganized workers. तो हर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को एक नंबर दिया जाएगा जिसको बुलाया जाएगा द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर. ठीक है, UAN. ये क्या है? ये एक 12 डिजिट नंबर है जो यूनिकली असाइन किया जाएगा टू ईच अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जब उसका रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पे हो जाएगा. एंड फिर उसके बाद ये नंबर जो है ये एक परमानेंट नंबर बन जाएगा. एंड एक बार ये असाइन हो गया, इट विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर द वर्कर्स लाइफ टाइम. So there is this universal account number. अब इसके बेनिफिट्स क्या है इस पर्टिकुलर ई श्रम पोर्टल के? देखिए, अब एक बार जब वर्कर्स रजिस्टर हो जाते हैं, so the unorganized those workers will get accidental insurance cover of 2 lakhs under the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. Basically, this Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana already exists, but this particular portal will be used to deliver the social security benefits like these. In the future, जितने भी social security benefits होंगे for unorganized workers, इस portal के through deliver किए जाएंगे. और इसका एक और use ये है कि emergency या pandemic like situations में इस डेटाबेस को यूटिलाइज किया जा सकता है टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू द एलिजिबल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. अगर कोई इमरजेंसी आ गई या कोई नेशनल पैंडेमिक लाइक सिचुएशन आ गया तो इस डेटाबेस को यूज करके नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है टू दोज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इट इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर पीपल बिटवीन 18 to 70 years. Okay, 18 to 70 years के एज ग्रुप के लिए दिस इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम. यहाँ पर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट जो है, so the benefit is that 2 lakhs is provided at the time of accidental death and permanent disability, and 1 lakh is provided in case of partial disability. So basically it is an accidental insurance scheme. And अब ये जो है रजिस्टर ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अंडर दिस योजना विल बी गिवन. So after registering, that the unorganized worker will get this accidental insurance cover. तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि which of the following agencies has launched the e-Shram portal, आपको पता होना चाहिए. You'll be able to answer that is the Ministry of Labour and Employment. It is not Niti Aayog, it is not any other ministry, or it is not Labour Bureau. It is Ministry of Labour and Employment. Next, very quickly about the account aggregator framework. So we'll try to understand quickly what is an account aggregator. Recently, 8 major banks in India came together to join this account aggregator network. Okay, so that's unimportant, but see, this was somewhere in October or so. The point, September, October time. So the point here is now,
We have to understand what is an account aggregator. That is what we have to do. अब देखिए account aggregator का concept समझने की कोशिश करते हैं. देखिए अगर एक पर्सन है जिसको लोन लेना है बैंक से, ठीक है, पर्सन वांट्स टू अवेल लोन फ्रॉम अ बैंक, तब person, if there is a person A who wants to avail loan from a bank, now this person A has to provide all the necessary financial information, जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट है उसका इन म्यूचुअल फंड्स, कितना पेंशन फंड है उसके पास, कितना इन्वेस्टमेंट है इन इक्विटीज, कितना फिक्स डिपॉजिट है, कितना टैक्स उसने भरा है, ये सारी चीजें द पर्सन हैज टू प्रोवाइड टू द बैंक. क्यों? ताकि वो अपना क्रेडिट वर्दीनेस दिखा सके टू द बैंक. पर जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी चीजें दिखानी पड़ती है, तो द पर्सन हैज टू गो टू मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू गेट अ फिजिकल कॉपी ऑफ दिस फाइनेंशियल पोजीशन दैट द पर्सन हैज टू शो हर और हिज क्रेडिट वर्दीनेस. Also banks then look at the credit score of a person and then banks decide करती हैं कि क्या this person को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है. इट इज अ वेरी टायरिंग एक्सरसाइज एंड यहाँ पर द अकाउंट एग्रीगेटर्स जो है कम इनटू द पिक्चर. So here what the person can do, this person A can authorize an account aggregator. Account aggregator को authorize कर देगा to gather all the financial information of this person from various financial institutions and share this information with the bank. So account aggregator एक intermediary की तरह काम करेगा. अब remember this, that the account aggregators are registered as NBFCs and they are regulated by the RBI. ठीक है, so registered as NBFCs. So NBFCs generally कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है? NBFCs are registered under the Companies Act. And they are actually regulated by the RBI. कुछ account aggregators हैं that are registered with the RBI. Now remember this thing that the account aggregator cannot see your data. Okay, the account aggregator cannot see the data. They take it from one financial institution. कोई financial institution से data लेंगे and then they will provide it to the bank. Okay, and ये जो डेटा है जो अकाउंट एग्रीगेटर्स शेयर करते हैं, लेट अस से दे कलेक्ट अ डेटा फ्रॉम द म्यूचुअल फंड कंपनी, so then this data that they have to give this data to the bank, but this data they cannot read. It will be end to end encrypted and there will be a use of the technology of digital signature. So this process is much more secure than actually sharing the paper documents. Because account aggregator को नहीं पता चलेगा, they cannot see the data. Finally, when it goes to the bank, it gets decrypted and the recipient will be able to see the data. इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं. It can reduce the time and efforts in giving loans. It can help the banks to easily judge or easily assess the credit worthiness, and it can improve credit creation in the economy, and it can because there is no tampering that will take place, so it is a tamper-proof documentation. And also MSMEs को भी फायदा हो सकता है because banks can extend loan to MSMEs without any kind of collateral, because banks can take a holistic look at the finances. Next is about this China का East project. ठीक है, East project is China's. Remember that China's East project is Experimental Advanced Superconducting Tokamak. इसको एक और नाम से बुलाया जाता है आर्टिफिशियल सन. सो रिमेंबर आर्टिफिशियल सन इज अ प्रोजेक्ट बाय चाइना. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सन अचीव्ड a plasma temperature of 120 million degree Celsius. ये माना जाता है कि टेम्परेचर सन के कोर पे टेम्परेचर जो है दैट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. इसका ये देखिए, और ये है 120. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इज मच हायर देन दैट. तो बेसिकली ये माना जाता है कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप in the country's quest to unlock clean and limitless energy with minimal waste products. अब ये अगर हम ईस्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो बेसिकली व्हाट इज दिस? The East basically is in this mission they are aiming to mimic the energy generation process of the sun, and for that they employed nuclear fusion. So remember that nuclear fusion is used.
ठीक है, how does this artificial sun that is east work? This works, it replicates the fusion process that is carried out by the sun and the stars. तो इसको अचीव करने के लिए फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर बहुत ही ज्यादा हीट एंड प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है ऑन हाइड्रोजन एटम्स, सो दैट व्हाट हैपेंस इज दैट दे फ्यूज टुगेदर. ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम का यूज किया जाता है. The nuclei of deuterium and tritium are made to fuse with each other and they create a helium nucleus, a neutron along with a lot of energy. अब एक चीज ये याद रखिएगा कि चाइना इज नॉट द ओनली कंट्री दैट हैज अचीव्ड हाई प्लाज्मा टेम्परेचर्स. 2020 में साउथ कोरिया का South Korea's K-Star reactor also set a new record by maintaining a plasma temperature of 100 million degrees Celsius for 20 seconds. So this has been achieved. So अगर ऐसा बोला जाए कि China is the only country that has achieved high plasma temperatures, no, it has also been done by South Korea. Now, one very, very important fact here is that this particular yeast is a part of the ITER project. ITER project जो है, it is said to be the world's largest fusion experiment. 35 nations का collaboration है. Basically it is of 7 parties, जिसमें European Union, China, India, South Korea, Russia and United States are part. So ITER is funded and run by the 7 member parties, that is China, European Union, India, Japan, Russia, South Korea and USA. So basically the aim of ITER is to replicate the fusion processes of the sun and create energy on earth. And जब ये complete हो जाएगा the construction of this, तो ऐसा कहा जाता है कि this will be the world's largest magnetic confinement plasma physics experiment and the largest experimental tokamak nuclear fusion reactor. So this is being built, this ITER का जो reactor है in this mega project, it is being built in southern France. Long term goal इसका है to generate electricity and then it has a lot of other goals. So this is clear, right? So now अगर ये बोला जाए कि the East project by China is a part of the ITER, that is true. East is a part of this ITER. And India is also a part of ITER, remember. Now very quickly about the research stations of India in the Antarctic and Arctic. ठीक है, अंटार्कटिका में इंडिया के 2 research stations हैं. One is Maitri and the second is Bharti. ठीक है, India has 2 research stations in Antarctica. This is relatively new. जो Bharti है, Bharti is relatively a new station that has been established in 2013. And ये दोनों stations पर research and investigations are undertaken to understand different processes, understand polar processes and phenomena. So remember this, okay, कि ये दोनों research stations, Maitri and Bharti, are in Antarctica. India के research stations at Antarctica. One, Maitri, was established in 1989 and Bharti in 2013. Actually speaking, India का एक और साइंटिफिक बेस स्टेशन था अंटार्कटिका में. ठीक है, इट वाज देयर, नाउ इट इज नो मोर देयर, इट वाज डीकमीशन. बेसिकली ये दिस वाज पार्ट ऑफ द इंडिया, ये सबसे पुराना वाला था, दैट इज दक्षिण गंगोत्री. इट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम एंड अंटार्कटिका में है एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर द दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर. So this was basically established in 1984, but it was decommissioned in 1990. उसके बाद से this functions as a supply base. तो बेसिकली दक्षिण गंगोत्री जो है 1988-89 में अबैंडन कर दिया गया था बिकॉज इट गॉट सबमर्ज्ड इन आइस एंड फिर इसको दिस मैत्री जो है इट सक्सीडेड दक्षिण गंगोत्री. ठीक है, दैट इज 1989. अब आर्टिक में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री. ठीक है, in 2008 India set up its first permanent research base in
on the Arctic Ocean, that is Himadri. So Himadri was established in 2008. There is another, the second Arctic research station, an observatory जिसका नाम है INDARC, was commissioned in 2014. तो ये जो INDARC है, ये इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मूर्ड ऑब्जर्वेटरी है इन द आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक रीजन, सॉरी, इन द आर्कटिक ओशन या आर्कटिक रीजन. So it is India's first underwater observatory in the Arctic region. INDARC का research goal है to study the Arctic climate and its influence on the monsoon. So now suppose we are asked that which are the scientific investigations that are located in Antarctica, and we are given these names. We know that Maitri and Bharti are located in Antarctica, Himadri and INDARC in the Arctic region. Okay, Dakshin Gangotri was in Antarctica as a research station, but it is no more operational as a research station. It functions as a supply base. So if you look at this, this is something that is part of the NCERT basics. Next thing is very basic and very quick fact from NCERT's geography. देखिए, planets with ring, which are these are the planets that have rings around them in our solar system. There are 4 planets in our solar system that have rings around them. They are the 4 giant gas planets: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Saturn जो है, it has the largest ring system. Saturn का ring system तो बहुत prominent है. It has the largest ring system and बहुत दिनों तक पता था लोगों को, 1970s तक ये तो पता ही था कि Saturn के पास rings हैं, पर it was only in the 1970s that the rings were discovered around the other gas planets. ठीक है, तो रिंग्स है अराउंड जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ये दे आर मच स्मॉलर, दे आर फेंटर एंड डार्कर देन द रिंग्स ऑफ सैटर्न. Another very quick fact from the NCERT's social and political life 1 NCERT जो है, there is a fact given यहाँ पे, देखिए, केसर सागा. This केसर सागा, remember, is a Tibetan epic जिसको लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है. So ये जो केसर सागा है, this is performed, so the local versions of this particular Tibetan national epic Kesar Saga are performed and sung by both Muslims and Buddhists. So Islam जो है लद्दाख region में introduce किया गया था more than 400 years ago, and वहाँ पर एक significant Muslim population है, and Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Next, remember this association, Khamba Thoibi. ये एक epic है of the Meitei people, or Meitei people, however it's pronounced, Meitei epic. And Numit Kappa is also another epic that is of the Meitei people. Meitei people कौन है? Meitei people or Manipuri people are the ethnic group that is native to the state of Manipur. So although they have a population that has settled in Assam, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and their presence is also found in Bangladesh, Myanmar, but the Meitei ethnic group represents about 53% of Manipur's population. So remember this association, Khamba Thoibi. Khamba Thoibi is the greatest of all Meitei epics, माना जाता है Khamba Thoibi. It consists of many verses, and it is considered to be even longer than Ramayana. तो बस ये याद रख लीजिएगा, नुमित कप्पा एंड खम्बा थोइबी मेते पीपल का है, एंड केसर सागा, इट इज परफॉर्म्ड इन लद्दाख. इट इज अ टिबेटन एपिक एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ. Oh, I'm sorry, Muslims and Buddhists. Sorry, Muslims and Buddhists both. It's sung by Muslims and Buddhists both. Next, very quick fact again from the very basic NCERTs of geography class 6th. ठीक है, ये जो है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये plants जो है, they are found in this kind of vegetation is found in dry areas of the country. Remember that they are found in the dry areas of the country.
cactus में क्या होता है, we see that the leaves are formed in the form of spines to reduce in the form of spines to reduce loss of water. अब बेसिकली ये जो है दिस कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर is found in the states of Rajasthan, in the state of Punjab, Haryana, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड गुजरात. अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये है, बिफोर वी मूव ऑन, दिस इज जस्ट अ फैक्टॉइड काइंड ऑफ थिंग. सी, अब ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स को ड्राई क्यों कह रहे हैं हम? देखिए, अगर आपको याद होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, तो Western Ghats, these are the Western Ghats. This is the windward side and this is what we call the leeward side, right? So जब यहाँ पर rain होता है, so rain happens on this side. And on the eastern slope is the rain shadow region. Okay, it's the rain shadow region. और इसीलिए there is a dry air. यहाँ पर जो air है वो dry descending air comes. So basically यहाँ पर जो air है that goes and rises up, there is condensing water vapor and then precipitation takes place, and बाकी का then there is a descending dry air, and this side of the leeward side is basically the rain shadow region, which is why we say कि ये dry जो plant जो dry region में मिलते हैं, we can find them on the eastern slopes of the Western Ghat as well. Now very quickly, the countries that border the Black Sea को कौन सी countries border करती हैं? So just have a look at this map. और इसके लिए एक shortcut है that you can remember, that is Burger T. This is the common shortcut that is used for remembering. So yeah, anyhow, so कौन से countries हैं? Bulgaria, Ukraine, Georgia, Romania, and Turkey. Remember this, okay? Remember this with this mnemonic. So, Bulgaria, Ukraine, Russia, Georgia, Romania, and Turkey. One thing you can note here is the strait. There is a strait that connects the Black Sea and to the Sea of Marmara, that is known as the Bosporus. The Bosporus Strait. ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को कनेक्ट करता है द बॉस्पोरस स्ट्रेट. अब ये बॉस्पोरस स्ट्रेट के इस तरफ जो है देयर इज यूरोप एंड इसके इस तरफ इज एशिया. दोनों तरफ जो है टर्की ही है, देयर इज टर्की हियर. So basically what we can see is that this Bosporus Strait and the Sea of Marmara basically form a transitional zone between the Black Sea and the Mediterranean Sea. ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ Azov by the Strait of Kerch. So there is a Strait of Kerch here, remember that. So the Strait of Kerch connects the Black Sea to the Sea of Azov. अब ये जो ब्लैक सी है basically is one of the major water bodies that is famous. It is a famous inland sea of the world. ठीक है, and there is a significant absence of oxygen in the waters of Black Sea. It is also said that the anoxic condition, यानी कि the absence of oxygen, is caused because of the process of eutrophication. So as far as passage through the sea is concerned, there is this UN clause. UN clause is basically United Nations Convention on the Law of the Sea. Or under the international law of the sea, innocent passage permits a vessel to pass through another state's territorial waters as long as it does not affect its security. So that is it for today as far as this prelims video is concerned. Baki ka in the next one.